आपण मानक शुभ संध्या आज आउ गोटे अध्याय को नहीं आम आरंभ करवा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ आम शेष अध्याय ब्लॉक 4 बट ये अध्याय आम दुईटी यूनिट अच्छी यूनिट 9 और 10 9 और 10। तो गत थर आम पढ़ी गत काली आम पढ़ी सप्लाय ऑफ मनी माने मनीर मुद्रार जोगाण केते प्रकार मनी अच्छी आम पढ़ी टोटाल मनी सप्लाय केते रोची तार कंपोजिशन तार तार कंपोनेंट आम पढ़ी मनी सप्लाय दैट इज सप्लाय ऑफ मनी इज इक्वल टू M1 M2 M3 M4। तो मनी सप्लाय कौन पुंखानुपुंख भाव में आम आलोचना करते। आज आम द्वितीय भागटा पढ़ा मनी डिमांड कहीं जदि आम कह मनी डिमांड और मनी सप्लाय पढ़ा द्वारा कौन लाभ हम कौन आम पाइबा ना आम देखा इक्विलिब्रियम केमती इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम केमती बाहर करा जाएबा डिटरमिन करा जाए। तो एबे आमे आरंभ करिबा प्रथम कथा हला एई अध्याय आमे कौन कौन पढ़िबा आमे एक्सप्लेन करिबा आमे आलोचना करिबा रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस। तो आमे जो पढ़ी मनी सप्लाई गत कालीर तार रिलेशन कौन प्राइस सहित संपर्क देखिबा। दुईटा थ्योरी अच्छी गोटे आमे पढ़िबा बेसिकली दैट फिशर्स अप्रोच कैम्ब्रिज अप्रोच एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी तापरे केन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो तीनटा थ्योरी बेसिकली फिशर्स कैम्ब्रिज और गोटे है केन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तापरे शेष में आम आज पढ़ा जे वर्तमान जो मनी सप्लाई पढ़ी और डिमांड पढ़ा तापरे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम केमिति हुए सेटा आम शेष में आलोचना करिबा। तो आम गोटे थ्योरी अच्छी जो तत्व अच्छी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर्स जो देथिले से गोटे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी देले से कौन कहले जे आमे जो हार रे मनी सप्लाई बढ़ेबा से हार रे हमर प्राइस राइज करिवो प्राइस लेवलटा बढ़िवो। तो से एम्फासिस कले जे बेसिक फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज जोटा आम गत काली पढ़ी फंक्शन ऑफ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर ऑफ वैल्यू जो आम पढ़ी से कहले जे मनी रा मेन काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आउ लोक माने कौन पाई पैसा रखती टू कैरी ट्रांजैक्शन माने देण नेण करने जिनिस पत्र किणवाई देण नेण करने मनीर आवश्यकता थाए। द पीपल होल्ड मनी टू कैरी ऑन ट्रांजैक्शन दैट इज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज जोटा आम गत काली आम पढ़े किंतु सी तत्व कौन देले थ्योरी कौन देले द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू पीटी। तामाने जेतेबेले आम कौन जिनस किणुचे ट्रांजैक्शन करुचे तार मूल्य से केमती पाइबा ना प्राइस इनटू ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इनटू ट्रांजैक्शन और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मेड दैट प्रोडक्ट। तो पीटी ताने सेटा गोटे मूल्य तार ट्रांजैक्शन रो मूल्य। So the value of PT must be identical to value of money flowed used to buy goods and services। तामाने को करा गला कौन को गला जे PT समान आइडेंटिटी एका भलिया हवा दरकार केमती ना वैल्यू ऑफ मनी जति की वैल्यू ऑफ मनी यूज करा जाउची जति की टंकार मूल्य जतले यूज आम करूचे ट्रांजैक्शन जति की यूज करचे केतले किनिबा पई जतले जिंस पत्र तार वैल्यू जी पीटी से माने पीटी माने वैल्यू ऑफ मनी फ्लो यूज टू बाय गुड्स माने केते टंका हमरो मार्केट रे फ्लो करूची प्रभावित होउची
प्रभाव होची गुड्स एंड कमोडिटीज और द्रव्य और सेवा को किणवा पाई द वैल्यू ऑफ मनी फ्लो इज इक्वल टू नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई माने जेति की वैल्यू फ्लो करा जीवो दैट इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी ता माने जेति की हमें मनी डिमांड करछे ए जिनसटा किणवा पाई ता सेति की मनी सप्लाई मार्केट रे बाजार रे अछि ता माने मनी सप्लाई किए करंती गत थर हमें कथा हितले गत काली जे सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री एवरी कंट्री सप्लाई मनी ता माने एम दैट इज मनी सप्लाई इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक एटा मनी सप्लाई को फिक्स करता है आउ जेतेबेले से जो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड जो सप्लाई करू जति परिमाण रे ताकू सर्कुलेशन केते टाइम सेटा होची दैट इज v तो v is the velocity of circulation of money ता माने हाउ मेनी टाइम्स दैट मनी इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस माने केते थर से मनीटा यूज करा जाउची तो सेटा होची तार टोटल मनी सप्लाई चारि पर निर्भर करुची ता माने the number of times the money stock turns over a period of time or per year in order to finance the flow of transaction तान आम जो जिनस किणुचे से मनीटा केते थर यूज होची बा ट्रांजैक्शन रे आउची सो ये जो जिनसटा कहले से लिखा है इट इज द रेट माने जो मनी सर्कुलेशन इज द रेट जो वेलोसिटी इज द रेट सॉरी at which the circulation of money or number of times the currency notes change hands in a period गोटे खाम केते थर ए सेम करेंसीटा सेम मनीटा सेम मुद्राटा समान मुद्राटा गोटे हाथ रो गोटे हाथ को जाउची गोटे समय गोटे पीरियड टाइम रे केते थर सेटा होची तो फिशर से या को नै कि गोटे इक्वेशन तैयारी करले मनी सप्लाई और मनी डिमांड को नै करले कोन ना फिशर्स इक्वेशन इज इक्वल टू mv इज इक्वल टू pt सॉरी pt टा एठी लेबी जाइछ तो सिंस द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिफिकल्ट टू मेजर हमें तो कोनोसी भल ट्रांजैक्शन करछे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन टा हमें जमती आम कहते नेशनल इनकम प्रोडक्ट मेथड रे जमती इट इज नॉट इजी सेमती इकोनॉमिक्स आल्सो यूज डिफरेंट वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी बाय रिप्लेसिंग t विथ y ता माने आम t टा को रिप्लेस करी y की नै आसले pt जगह रे आम कोन लगेबा py ता माने रियल आउटपुट और दैट विथ y दैट इज द रियल आउटपुट और इनकम y इज इक्वल टू इनकम तो क्वांटिटी थ्योरी जोटा ऑफ मनी कहले तार इक्वेशन टा चेंज हो गला जोटा mv इक्वल टू pt थिला बर्तन mv इक्वल टू py so the classical economics also assume that output that is y is fixed if v and y are assumed to be constant हमें यदि v एपटे lhs लेफ्ट हैंड साइड रे हमें नेले v कांस्टेंट नेले एबेटे y त माने इनकम भी कांस्टेंट वेलोसिटी भी कांस्टेंट नेले ताला कोन रहइला mp रहइला ता माने मनी सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ता माने जते रेट रे हमें मनी सप्लाई बढ़ाइबा सेति की रेट रे हमर प्राइस बढ़िबो सो एठी तणो से कोन कहले देखंतु द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आज पर फिशर को अनुसार क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कौन कहूँ सजेस्ट कौन कर कहते जे द चेंज इन मनी सप्लाई कजेस प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लेवल ता माने जेतु v आउ y दीज आर कांस्टेंट दिस टू आर कांस्टेंट हमें ए दीटा को कांस्टेंट नहीं गले v बार आउ y बार नहीं गले चलो एटा कांस्टेंट हे गला ताल अल्टीमेटली हम कोन देखिले ना आम कौन सी प्राइस यदि बढ़ुची इकोनॉमी रे गोटे अर्थनीति रे ताहा डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी सप्लाई ता माने
जो रेट रे मनी सप्लाई बढ़िबो से रेट रे से हार रे प्राइस राइज बढ़ी प्राइस बढ़िबो तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी व्हिच कैन बी समराइज्ड ताले एज पर फिशर कौन क्वांटिटी थ्योरी में ना क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमाइंस द प्राइस लेवल ता माने हमर कोनोसी प्राइस लेवल कोनोसी जिनसर प्राइस लेवल निर्भर करछि क्वांटिटी ऑफ मनी केते क्वांटिटी मनी मार्केट रे सप्लाई अछि तो क्वांटिटी इक्वेशन आम एवं कहवा इन परसेंटेज टर्म चेंज इन परसेंटेज चेंज इन एम दैट इज मनी सप्लाई प्लस युक्त परसेंटेज चेंज इन भी वेलोसिटी इज इक्वल टू सम परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस परसेंटेज चेंज इन इनकम तो माने चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन मनी डिमांड so money supply growth determines the inflation rate ता माने inflation rate टाको किए ठीक करुची ना money supply so as percentage change in y is assumed to be 0 quantity theory of money आउट सेकंड अप्रोच मु कोन कहबी आउट आमे कहली आज पढिबा सेकंड अप्रोच quantity theory of money रा अप्रोच कोन तत्व कोन देले से मान कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट जेमती आम ये कही फिशर सेमती एठी किछटा इकोनॉमिस्ट अर्थनीतिज्ञ कौ मैंने आसिले मार्शल अल्फ्रेड मार्शल पिगू एसी पिगू ये दीटी इकोनॉमिस्ट से टिके चेंज कले जदि मो मोर और समान दीटा को मतवाद समान अप्रोचटा समान बट टिके चेंज कले से कैश बैलेंस अप्रोच कले से ट्रांजैक्शन पार्टटा नेले से माने बेसिकली जदि आम आगो देखा से सप्लाई साइडटा बेसी इम्पोर्टेंट देले ये डिमांड साइडटा बेसी इम्पोर्टेंट केन्सटा ठारो आउट के आगो गले आम आगो पढ़िबा ताले पिगू और मार्शल कौन कहले दे according to these two economists or basically according to the Cambridge economist people hold money to meet transaction needs and also for precautionary motive लोक मैंने पैसा कहीं रखती खर्च करने जिनपतर किणापी आउ कि आमर भविष्य जो कि असुविधा हम क्राइसिस संकट समय आसो जमी कोविड टाइम लोक मान चाकरी पलैगला ये है सीगला तो यही समय जो प्रिकसनारी सावधानता मुझे जो मोर चाकरी पलैब से समय मो पैसाटा हाथ अच्छी खर्च कर सो ये दीटा लक्ष्य रे लोक माने पैसा को रखती सो बाय होल्डिंग मनी हाज एन हाँ मुझे किसी पैसा रखी ता माने एट द कॉस्ट ऑफ माय प्रॉफिट मुझे गोटे जगार इन्वेस्ट करता गोटे एसेट फिजिकल एसेट रियल एस्टेट एसेट हो गोल्ड हो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रे आमे जदि आमे किछि पैसा रखिबा फाइनेंशियल मार्केट रे ताले आमे कोन पाइबा ना इंटरेस्ट पाइबा किंतु मु जदि से पैसाटा हाथ रे रखुची ता माने मु किछि फॉरगो करूची इंटरेस्ट फॉरगो करूची तो बाय होल्डिंग मनी हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ इनकम if money were to be invested in assets such as bond which earn interest अच्छा ताले कैम्ब्रिज अप्रोच कौन कहले कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स assume that demand for real money balances is proportional to income ता माने मोर जत्ती की रेट रे इनकम बढ़िबो at what rate income is increasing से अनुसार डिमांड बढ़िबो k is the rate at which my income is increasing that means my demand for money that is m by pd is equal to ky ता माने डिमांड फॉर मनी जोटा कि कैश बैलेंस अप्रोच हम कहूचे हम सेत पे डिमांड करूचे ट्रांजैक्शन विथ प्रिकॉशनरी सेटा कहा पर निर्भर करछि ना इनकम ता माने it is
directly proportional to income. ତାମାନେ ମୋର ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ ସେତିକି ରେଟ୍ରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ମନି ବଢ଼ିବ. Here K is the fraction of income that people wish to hold as cash balances. ତ ମୁଁ ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ିବ ସେତିକି ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବି. ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ଟୁ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ. ଏଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେତିକି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ସେ କ୍ୟାସ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବ. ନାଓ at equilibrium money demand is equal to money supply, that is M by PD is equal to MP. ଆମେ ଯଦି ଉପର ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନକୁ ଇକ୍ୱେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା MP is equal to KY or M into 1 by K is equal to PY. ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? We should note that it is ମାନେ your demand is equal to supply. Money supply is equal to money demand. So you should note that the above equation is equivalent to MB is equal to PY. ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା ମୂଳରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କିଏ ନା ट्रांजैक्शन अप्रोच रे जो किए कहते माने हमर फिशर जो कहले एम बी इज इक्वल टू पी वाई सेटा इट इज सेम बारे एम इंटू के बाई 1 बाई के इज इक्वल टू पी वाई ताମାନେ मोर और लेस सेकंड पार्ट ता समान अछि पी वाई डिमांड फॉर जोटा हम कहउछि समान अछि डिमांड फॉर मनी आ रहला कोन चेंज कैम्ब्रिज अप्रोच आ ट्रांजैक्शन अप्रोच भीतर कोन रहला एटी एम समान अछि एटी एम समान अछि खाली रहला एटी 1 बाय के एटी बी ता माने देयर इज लिटिल चेंज लिटिल डिफरेंस सामान्य सामान्य सम्यक सामान्य भिन्नता रहइबो ए दुटा थ्योरी रे हम एटी देखिबो. Thus we see the Fisher equation and Cambridge equation version are equivalent more or less समान दुटा हम मूल कहिथिल समान. Here K is the money demand parameter and V is the money supply parameter. Khali change. If people hold more money for each unit of income, V is small. जदि लोक अधिक टंका रखिबे इनकम एतले बढ़िबो ताने वेलोसिटी कमी जो वेलोसिटी माने कोन हमें सर्कुलेशन करूचे ना एला कमी जो खर्च कले सर्कुलेशन हो हमें पैसा पाखे रखिया खर्च करिवानी ताले वेलोसिटी कमी जो যদি লোক রখিলে velocity যেতলে বড়িব if people hold less money for each unit of income then velocity is large. ता माने लोक पाखे कम रखिले खर्च अधिक कले velocity अधिक बढ़ियो. So we observe that K and V are two sides of the same coin. And like Fisher's approach, V is assumed to be fixed and K is also assumed to be stable in short run. Now V and K both are assumed to be stable or ताको चेंज करा जीवन बदला जाय परियो स्थिर रहइबो short run. So but in Cambridge approach the quantity theory of money कोन टिके जो हमें फरक कोन रहइला हमें जदी कहबा माने फिशर अप्रोच और कैम्ब्रिज अप्रोच भीतर फरक पड़ला जो डिमांड फॉर मनी से कहउतिले केवल ट्रांजैक्शन ये कहले ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशन द क्वांटिटी थ्योरी इज सीन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड फॉर मनी त माने डिमांड फॉर मनी रे ही डिफरेंस आ कुतरे and this approach derives the proportional relationship between quantity money and price level by assuming K and Y to be constant. से विषय कहते ये विषय कहले. So the Fisher approach on the other hand, मुझे मूल कहते Fisher approach emphasizes on supply of money. प्रथम रो हम आलोचना मूल कहले मूल कहले जे Fisher जेतेबेले supply of money की मनी रा जोगाण मुद्रार जोगाण को बेसी गुरुत्व देथिले किंतु कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट माने कोन देले ना डिमांड. सो बेसिकली डिमांड फॉर मनी की बेसी गुरुत्व देले. सो इफ आउटपुट y and k are constant then price level also doubles
until the new equilibrium is attained. तामाने जितेबाला जाए नुआ गोटे माने इक्विलिब्रियम न होइछि से पर्यंत प्राइस लेवल विल डबल till it is माने इक्वल. नेक्स्ट अप्रोच टा हमर कोन रहला केन्सियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी. तो ये जो फिशर और कैम्ब्रिज पर आसीगले केन्स. तो केन्स मूल कही केन्स जो आम पढ़ले लास्ट किसी दिन धरिकी आम पढ़ले केन्स सब डिमांड एग्रीगेट डिमांड को गुरुत्व देउथिले. जेमती एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देइथिले इट सेमती मनी रो एग्रीगेट डिमांड को भी से डिफाइन करछथि आलोचना करछथि. कोन according to Keynes demand for money is preference for liquidity. ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ liquidity preference କୁହାଯାଏ theory of money. ତା ମାନେ demand for money is for liquidity preference. माने liquidity माने केते कैश तम हाथ रे अछि for transaction. Liquidity means when an asset is converted into cash, ready cash, or public desire to hold cash. एबे जोटा कहला liquidity means लोक माने केते निज पाखरे रखंती कैश हिसाब रे और अदर फॉर्म्स जदि भी कैश रे न रखिले से माने रखिले जो फॉर्म रे रखिले गोल्ड रे रखिले बा जो थरे रखिले बॉन्ड रे रखिले तने इजीली जेम सेला को हमें रूपांतरित करि परथिबा कैश से लिक्विडिटी थिबा दरकार से एसेट रो. So ready to other firm for ready money like non-interest earning deposits. माने हमें एमि जगह रखिबा जेमि तक हमें जल्दी उठे दिबा बेसी यदि हमें फिक्स्ड डिपॉजिट रखिबा ताले इंटरेस्ट मिलिबो ताले उठे परिबा नै शीघ्र किंतु एमि जगह रखले हठात उठे हेलो ट्रांजैक्शन. Depending on his liquidity preference, an individual decide how much of his resources or income should be held in the form of liquid money. कहाँ पर निर्भर करछ ना liquidity preference ऊपर बना and how much in the form of other assets. से केते liquid asset बा liquid हिसाब money को हिसाब रखिबो आ other assets रखिबो. According to Keynesian view, there are three reasons. तीनटा कारण अछि. केन्स कहले तार तीनटा कारण लोक माने मनी डिमांड जो करंती तीनटा पर्पस मुख्य कारण तीनटा कोन जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस दे आर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एक प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी दुई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी. एटिके गुरुत्व सहित देखंतु ट्रांजैक्शन डिमांड मनी इज डिमांडेड फॉर तीनटा कारण पई लोक माने मनी डिमांड करंती जहा केन्स कहले. प्रथम हला ट्रांजैक्शन डिमांड जो देना लेना करि मनी द्वारा हमें जिंस किना पत्र बा ट्रांजैक्शन करि. ठीक अछि. सेकंड प्रिकॉशनरी जोटा कैम्ब्रिज कहिथिले हमें किछिटा सावधानता नबा किछि पैसा रखिबा सेविंग रे निज हाथ में रखु बा जोटे रखु जमती कि आम भविष्य सेटा आमको हेल्प करिवो साहाय्य करिवो जेतेबेले हमर किछि आगु को चाकरी पळेइबो बा क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस आसी जाबो. आ लास्ट से कहले स्पेकुलेटिव लोक खाली माने भविष्य पे रखती किंतु स्पेकुलेशन पे रखती माने केमती जोटा सेटा अन्य दी जन कही सेटा पर बेसी गुरुत्व देलेनी केमती आमे ताठर रिटर्न भविष्य स्पेकुलेटिव पर्पज रे पैसा रखियो जेमती कि सेथरु मते हाई रिटर्न मिलुथि हम स्टॉक मार्केट रखिबी बा गोल्ड मार्केट रखिबी बा बॉन्ड मार्केट रखिबी चोटी भी रखिबी स्पेकुलेशन में हाई रिटर्न आसीबो भविष्य हुए सेठी हमें पैसा रखी पारिबो. ता माने तीनटा पर्पज हला प्रिकॉशनरी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड. तो प्रथम हला ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कोन
ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी varies directly with income. अच्छा एटा हला ता माने आम यदि कह ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज द फंक्शन ऑफ इनकम ता माने चेंज इन इनकम विल लीड टू यदि आम इनकम चेंज करबा ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ियो निश्चित आम जदि एटा आम गोटे साधारण भाव आम देखा यदि आम आलोचना करिबा तो आमर आय बढ़िबो व्यय बढ़िबो तो ट्रांजैक्शन ता माने इट इज इनकम इलास्टिक ठीक अछि ट्रांजैक्शन डिमांड इज इनकम इलास्टिक तापर ए पर्सन विथ लो इनकम विल इनकर लो एक्सपेंस हाँ ये जोटा कहले हाई इनकम हैविंग हाई ट्रांजैक्शन ता माने जहार इनकम कम तार ट्रांसिट कम खर्च करिबो जहार इनकम अधिका से मोर खर्च करिबो अधिका खर्च करिबो ट्रांजैक्शन अधिका न such a demand for money also depends upon trade-off between holding cash balances and holding assets such as bond which are interest earning ता माने आम जो ट्रेड अफ करवा संपर्क करवा बिटवीन कैश बैलेंस एंड होल्डिंग एसेट्स मु किछि कैश हाथ रे रखिबी ना किछि आमे ताको इन फॉर्म ऑफ एसेट रखी होल्ड जोटा कि भविष्य में मते प्रॉफिट दबो थ्रू इंटरेस्ट ता माने जदि मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हाई ता माने मु कोन करिबी पैसा रखिबी आर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ता माने इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हाई सुधर यदि अधिका थिबो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द होल्डिंग मनी इज हाई माने पैसा अधिका हाथ रे माने माने सेव करी होल्ड कैश होल्ड करी हेन्स ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज लो जेतेबेले मु कैश बैलेंस अधिका रखिबी फॉर माने किछटा सुध पाइबा पई तले ऑब्वियसली मोर ट्रांजैक्शन डिमांड ता कमी जो ता माने दस ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी फॉल विथ द राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट यस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िबो तो ट्रांजैक्शन मनी डिमांड ता कमिबो काहे लोक ट्रांजैक्शन करियनि कहिबे सुधार बहुत सुधा बढ़ी गलानि चलो पैसा रखिबा ठीक अछि एबे हमें सेकंड दिटा कोन ना प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पड़िबा people also hold money to guard against uncertainty future receipts and payment are uncertain ता माने किछिटा लोक हम जो कहले प्रिकॉशनरी पर्पस माने अनसर्टेनिटी में रखंती एंड बिकॉज आम जाने आम आगु को कौन आम भाग्य अच्छी आम चाकरी रहा कोविड बेले सिचुएशन हम कई जाना आज फ्यूचर इज अनसर्टन से आम कि पैसा होल्ड करवा फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस सावधान न फॉर एग्जांपल फैमिली में होल्ड कैश टू मीट मेडिकल इमरजेंसी which may arise without warning केतबेले मोर देह खराब हो मु जानी सेति पई मु पैसा किछि होल्ड कर प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज रिलेवेंट टू M1 जोटा हम पढ़िथिले सप्लाई ऑफ मनी रे M1 M2 M3 तले हम यदि कहबा M1 includes precautionary although it can explain saving account which are also part of M2 ता माने आम यदि सेविंग अकाउंट रे किसी पैसा रखोचे बा डिमांड डिपॉजिट जोटा करछे डीडी सेविंग अकाउंट रे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किंतु आम मन इच्छा आम जिते उठे पारिया पैसा ता माने ये गोटे एक प्रकार हेलानी ट्रांजैक्शन पर्पस तार मुझे पैसा रखुची सेविंग अकाउंट रे ता माने कोन मोर जिते दरकार मु उठे पारि फिक्स्ड डिपॉजिट रखुनी तेणु यहाँ गोटे प्रकार ट्रांजैक्शन मनी भी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कौन
Speculative demand for money relates to function of money as a store of value. ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଗତକାଲି ମନିର ଫଙ୍କସନ୍ ଦି ପ୍ରକାର। କିଏ କହୁଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ତା ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କହୁଛି ନାହିଁ ଆକୁ ରଖ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମକୁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ, ଷ୍ଟୋର ଅଫ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ରଖୁଛେ ତାର ପଇସାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା ମୂଲ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛିଟା ପଇସା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ରଖିବି ଆଜି, ହୁଏତ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା 3 ଡବଲ ହେଇପାରେ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍ କରୁଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ଷ୍ଟୋର ଅଫ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ପଇସା ନଥାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିପାରିବି, ଯଦି ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ରଖିବି, 5 ବର୍ଷ ବା 8 ବର୍ଷ ପରେ ଡବଲ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋର ଅଫ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। In a portfolio of assets, an investor prefers to keep those assets which yield high returns. ତା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନେବି କୋଉଠି ରଖିବି ପଇସା, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ରଖିବି ନା ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବି ନା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ରଖିବି ନା କୋଉଠି ରଖିବି, ଯୋଉଠି ମୋତେ ହାଇ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିବି। ହାଇ ରିଟର୍ନ ହାଇ ରିସ୍କ ବି ଥିବ, ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ରଖିବି ରିଟର୍ନ ଅଧିକା ବଟ୍ ମୋର ରିସ୍କ ବି ଅଧିକା ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ରଖିବି ରିଟର୍ନ ଟିକେ କମ୍, ରିସ୍କ ଟିକେ କମ୍। ମୁଁ ଯଦି ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବି ରିଟର୍ନ ଆହୁରି କମ୍, ମୋର ରିସ୍କ ବି କମ୍। ମୁଁ ଜାଣିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ରିସ୍କ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ 5,000 ରଖିଲି ତାକୁ ଆର ମାସରେ 5,000 6,000 ହେଇଗଲା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ହୁଏତ କମି ଯାଇପାରେ, 4,000 ବି ହେଇପାରେ। The speculative demand for money is inversely related to rate of interest. ତା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଦେଖିଲେ they are directly related, transaction and with what income। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ transaction money and MT and M जो हमें जो precautionary MP is there but directly related to income। ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ ଆମର ସେଇଟା ବଢ଼ିବ। ବଟ୍ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ମନି ଇନକମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି, that is totally what unrelated to income but it is related to କ'ଣ rate of interest। ମାନେ ଇନଭର୍ସଲି ଅପୋଜିଟଲି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ମନି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ସରି କମିବ, ଦେନ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଲା speculative demand for money body। So if the current rate of interest is low, the speculative demand for money is high as the opportunity cost of holding money is low। तो एबे आमे आसीबा एठी जो केन्स जो ताकर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी टाको केमते आलोचना करले आमे देखिबा। एठी गोटे लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व देखंतो आपण माने जाके डिमांड कर्व, बट प्रथम रो डिमांड कर्व भलिया स्लोप डाउनवर्ड्स है, तापर कोन है ना इनइलास्टिक हो जाई, तामाने परे एटा गोटे हॉरिजॉन्टल गोटे ट्रेंड लाइन भलिया है। प्रथमे कम कम है आसला, तापरे तामाने एटा लिक्विडिटी प्रेफरेंस तामाने डिमांड फॉर मनी with respect to speculative हम यदि कहबा ताले तार कर्वटा ए टाइप। ता माने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िले स्पेकुलेशन बढ़िबो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिले स्पेकुलेशन बढ़िबो। तो जेतेबेले आर थिला R1 आर डबल R2 हे गला, ता माने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़िला। ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମୁଛି ଲୋକମାନେ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଅଧିକା ହେଉଛି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ OR2 ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକମିଂ ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ୍, ତାପରେ ଆଉ କମି ମାନେ डिमांड फॉर मनी कमुन गोटे कन्स्टांट ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, the liquidity preference curve that is LP curve is sloping downward implying demand for liquidity or speculative demand for money is low at high rate of interest। the rate of interest is high
speculative demand or liquidity is more, sorry less, ଯେତେବେଳେ liquidity ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ speculative demand for money is low, that high rate of interest is high, ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ rate of interest high, ଏଇଟା OM ହେଲା low, ଏଇଟା କମିଲା, ଏଇଟା ବଢିଲା OM2. Then however if the rate of interest is very low, ଗୋଟେ low କରିବା R2 ହେଲା ଆହୁରି କମେଇ ଦେବା, ତାମାନେ କ'ଣ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢ଼ିଯିବ ନା, ସେଇଠି କେନ୍ସ କହିଲେ ସେଇଟା ଏଇଠି ଆସିଯିବ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଟ୍ରାପ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ବଢ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ରୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟା ବଢ଼ିବ ନା? ନୋ, ସଚ୍ ରିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଟ୍ରାପ୍। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଇ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଏଇଠି ଏଲ୍ପି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଟ୍ରାପ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ କମିବ ନାହିଁ, ମାନେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଲେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ such a region is called liquidity trap region, which can be shown as E dash E double dash LP in the figure, and LP curve is perfectly elastic, ଏଇଠି ହେଇଗଲା elastic ହେଇଗଲା, ତାମାନେ parallelly ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। or at R2 ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା R2 ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ এটা perfectly liquidity preference curve perfectly କ'ଣ ହେଲା elastic ହେଇଗଲା। So in the liquidity trap region, monetary policy is completely ineffective, as any increase in money supply result no change in rate of interest or investment। ତାମାନେ ଏହି ସମୟରେ RBI जो monetary policy ନେଉଛି ଏଇ trap region ରେ completely ineffective ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା increase in money supply ଯଦି ପଢୁଛେ ବି ତାର ରେଜଲ୍ଟ କୋଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆମେ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट ना माने आमे वर्तमान मनी डिमांड मनी सप्लाई कम पड़ी गत थर, आज पढ़ले मनी डिमांड कौन, ता माने जो मनी डिमांड जानिले मनी सप्लाई जानिले तापर आमे इक्विलिब्रियम बाहर करि परिबा, ता माने डिटरमाइन करि परिबा। ता माने गोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट रे जोटी गोटे आमे देखियो जोटा कि मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, ठीक अछि। सो टोटल डिमांड फॉर मनी is the sum of money demand arising from all three motives। ताने वर्तमान आमे देखिले एक्चुअली डिमांड फॉर मनी जोटा आमे अदर दीटा इकोनॉमिस्ट कहले, फिशर बा कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट जो माने कहले, से माने कहले प्रिकॉशनरी एंड ट्रांजैक्शन, बट केन्स कहले प्रिकॉशनरी सॉरी ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। दावन आमे ये देखिए डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सॉरी ट्रांजैक्शन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड एंड स्पेकुलेटिव डिमांड। जेमती आमे सप्लाई ऑफ मनी कहिथिले M1 M2 M3 M4, सेमती डिमांड फॉर मनी लिखिले MDT transaction, precautionary and speculative। Yes. So here speculative demand for money depends upon rate of interest। कहथिली transaction and precautionary demand for money depends upon income level। एबे हम जस्ट कथा हैथिले हम जेतेबेले कोनोसी इकोनॉमी लोक माने बेसी ट्रांजैक्शन डिमांड करछन्ती बा प्रिकॉशनरी डिमांड करछन्ती, एटा कोन पे केतेबेले डिमांड बढ़िला जेतेबेले तमर इनकम बढ़िला, इनकम बढ़िले ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी डिमांड बढ़िबो, किंतु इनकम बढ़िले स्पेकुलेटिव डिमांड सहित तार संपर्क। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन नॉट इनकम बट इंटरेस्ट रेट। ता माने इट इज when in that mean speculative demand for money depends upon the rate of interest।
ताले रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन द्वारा ना कही ना इनवर्स रिलेशनशिप hence money demand is an increasing function of income माने ध्यान दे सुन तो money demand is an increasing function of income को money demand ना transaction और प्रिकसन में जाने को how it has decreasing function of interest rate को थे ना केवल speculative ता माने लोक मनी डिमांड अधिक करी माने जेतले जे हम कहू डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर इज मनी इज मोर so money demand function is now given by md the demand for money is equal to lyr ठीक है ओके वाई कहीं ना लिक्विडिटी टा प्रिफरेंस टा का पर निर्भर कर दीटा जिनस गोटा ला y दैट इज इनकम आ गोटा ला r दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट तेबे हमें नेक्स्ट पढ़िबा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जोटा कि हमें हमर मुख्य आलोचना रो विषय वस्तु कोन हमें पढ़िले मनी सप्लाई कोन मनी डिमांड कोन तापर पढ़िबा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कोन तो मनी सप्लाई इज डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक आदर हमर किछ कहर नै हेटा मनी तर हाई पावर मनी को तो पहले हमें पढ़ी दिले तो मनी सप्लाई इज समहाउ इंडिपेंडेंट बट at equilibrium जदि हमें कहबा मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड जदि हमें इक्विलिब्रियम मार्केट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कथा कहबा जेतले मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड दैट इज इक्विलिब्रियम जेति की मनी सप्लाई होची सेति मनी डिमांड होची दैट इज ms is equal to md money supply is equal to money demand or ms is equal to l into yr ता माने money supply is the function of what y and r तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिपिक्टेड हियर हमें जदी देखिबा एठी गोटे आपण मान देखि परिबे फिगर अछि बा गोटे डायग्राम अछि हम एठी देखिबा मनी सप्लाई जो कहितली कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द आरबीआई केते बढ़े न बढ़े दिस डिपेंड अपॉन आल्सो ए रिजर्व गत गले हम आलोचना करथिले आ गोटे हला कोन मनी डिमांड कर दैट इज like a demand curve slope downward from left to right so the demand for money is negatively sloped and theory of money supply of money is fixed by central bank and that is why it is fixed it is not related to rate of interest it is fixed that is inelastic now at r star जोटा अछि कोन है देखो डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी ता माने डिमांड कर और सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई रे डिमांड मनी डिमांड कर और मनी सप्लाई कर ms दे बोथ हमें दीटा को हमें इंटरसेक्ट करले ताले दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट ताले r dash or r star is demand for money is equal to supply of money that is equilibrium so at this rate of interest r star given a level of nominal income को माना नियत गोटे nominal अछि then people will willing to buy willing to hold an amount of money equal to existing money supply ता माने at the interest rate below r0 हम यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाई दबा r स्टार्टर कमाई दबा the demand for money exceeds the supply of money डिमांड बढ़िबो लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़िबो जते बळे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिबो हम जानि छै तो when the rate of interest is less the demand for money is more तो
interest rate has to rise so that demand for money decreases. तामाने यदि हमें डिमांड फॉर मनी को डिक्रीज करिया पई ताई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा इन सप्लाई तापरे एनी डाइवर्जेंस ता भीतर जदि आर ए जगह इक्विलिब्रियम और एटी सॉरी एटी जे डाइवर्जेंस आने ऊपर गला ना तळ गला एनी डाइवर्जेंस टू ऑटो करेक्ट इटसेल्फ टेंड टू ऑटो करेक्ट इटसेल्फ माने जदि किछ असुविधा होला ताले ऑटोमेटिकली से करेक्ट है पुणी इक्विलिब्रियम को पळे आसी then any divergence from R star tend to auto correct itself through the mechanism of money supply and demand. तामाने ये जो mechanism थी demand for money and supply of money mechanism with rate of interest तारा rate of interest through रे हमें auto correct ही पड़ी. Now we'll go for getting knowledge regarding examine the how changes in nominal income or money supply affects the money market equilibrium. माने national in changes in national income and money supply यदि मो देशर इनकम बढ़ुची आ मनी रा चाहिदा पैसे बढ़ुची that affect the money market equilibrium. So here for a given rate of interest that is R1, increase in national income shift the money demand curve to the right. 80. With this rate of interest, जेतोले मोर इनकम बढ़ुची ताले मोर डिमांड मनी डिमांड टा ऊपर जाउची एटा at R1 interest rate with the new demand for MD2 there is excess demand for money new demand for MD2 there is excess demand for money ता माने जेतोले M1 रु M2 को MD2 को पळेला ता माने कोन डिमांड फॉर मनी बढ़िला ताले there is excess demand for money. So this leads to increase in interest rate. ताले demand बढ़िला पण rate of interest बढ़िला ठीक है जी rate of interest बढ़िला पुणे आउथरे इक्विलिब्रियम हेला that leads increase in interest rate work to R2 the data point equilibrium गोटे हेला interest rate बढ़िया पूर्वटा that is R1 आउटला interest rate बढ़िया पर R2 तने R1 जति इक्विलिब्रियम थिला R2 से इक्विलिब्रियम रहला खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कला ता माने रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द की फैक्टर दैट डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी. So this leads to increase in the interest rate R2 as I कहली and again establishing new equilibrium. जो surplus टा थिला ता पुणी तापर हमें पढ़िबा इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई एटी कोन पढ़िले डिमांड मनी डिमांड बढ़िले पुणी इक्विलिब्रियम माने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो केमती इक्विलिब्रियम हला न्यू इक्विलिब्रियम केमती आसे एबे देखिबा मनी सप्लाई बढ़िला सप्लाई कर्व हम कहितली कांस्टेंट MS1 और MS2 this supply curve. Now the changes in monetary policy of an economy affects money supply. मु जदि monetary policy रे चेंज करिवि तले मोर अपन इकोनॉमी affects money supply. मार्केट रे मु अधिक मनी सप्लाई करिया पन so with given money demand टा समान given an increase in money supply यदि हमें मनी डिमांड को समान रखिबा increase in money supply from MS1 to MS2 यदि मो सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर देली ता माने कोन मनी सप्लाई बढ़ी बट डिमांड फॉर मनी
is remain same. ହେଲା, shift the money supply curve from MS1 to MS2, which is presented in this figure. MS1, MS2, that shifts route turn, and you can see how the equilibrium also changing and income is also changing. So this leads at the initial rate of interest, that is R1, it will R1, it will R2. The new money supply, that is MS2, the MS2, there is a excess supply of money. Supply of money is more, that is why demand for money is less, and this leads to fall in interest rate. Automatically interest कमिଯିବ, time to time market देखा जाए, that leads to fall in rate of interest to attain new equilibrium. Rate of interest कमे देले पुणी सेटा आउट इक्विलिब्रियम तैयारी करिवो. देखिए तो आमे एथरु जानिले जे गोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट एमिति जिनस जोटा कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्विलिब्रियम करिवारे सहायता करिथाए. तो आमे ये जो दुईटी पर्यायर आमे आलोचना कले, मनी डिमांड और मनी सप्लाई. प्रथम मनी सप्लाई पढ़िले, तापर मनी डिमांड पढ़िले. इक्विलिब्रियम मनी मार्केट रे इक्विलिब्रियम केमिति होची थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंटरवेंशन, केमिति रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम करूछ सेटा भी पढ़िले. एबे ताले आजिरो जो अध्याय में पढ़िथिले तार सम अप करिबा कोन आमे एक्चुअली आज पढ़िले. लेट अस सम अप. In this unit, we learned the relationship between money supply and price level. प्रथम रे आमे आगुर तो मनी सप्लाई पढ़ी गत काली, तो एथिरे पढ़िले मनी सप्लाई और प्राइस लेवल टार रिलेशनशिप कौन कौन तापे आमे दीटा अप्रोच पढ़िले. कौन ना गोटे ला क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो टू अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी मनी रे, गोटे ला फिशर अप्रोच आ गोटे ला कैम्ब्रिज अप्रोच. फिशर अप्रोच कौन कहितिला, which plays an important role ना सप्लाई, से जोटा सप्लाई साइड टे कहिथिले फिशर. आउ कैम्ब्रिज कहिथिले डिमांड साइड वा कैश बैलेंसेस अप्रोच कहिथिले. से कहले मनी रो जो हम लोक डिमांड करंती केवल ट्रांजैक्शन अप्रोच, ये कहले ना ट्रांजैक्शन विथ तमरो प्रिकॉशनरी पर्पज रे मनी डिमांड करा जाय. सो द बेसिक कंक्लूजन फ्रॉम दिस टू अप्रोचेस जोटा हम कहले इज द सेम, किन पाखा पाखी देखिले दीटा को समान अप्रोच, बट एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई रिजल्ट टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन प्राइस. कौन से समान, कौन समान गोटे जे मनी सप्लाई में बढ़ेले प्राइस लेवल बढ़े, दैट इज सेम. ऑल्सो वी लर्नड अबाउट मनी डिमांड. तारे मनी डिमांड रे कौन पढ़िले, जो केन्स कहले मनी इज डिमांडेड फॉर थ्री बेसिक पर्पजेस. There are three motives for which people hold money or demand money. कौन, ट्रांजैक्शन पर्पज मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव. आमे ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव रे कौन ना दीज आर इनकम इलास्टिक. ता माने जते बेले इनकम बढ़िबो लोक माने अधिक ट्रांजैक्शन खर्च करे बने बढ़ेबे, आउ लोक माने प्रिकॉशनरी सेविंग भी करिवे. y इज इक्वल टू c प्लस s. आउ गोटे कहला से कहले नहीं से ताकू छाड़ी लोक मानकर आउ गोटे पर्पज अछि जोटा कि होछि स्पेकुलेटिव मोटिव. तो स्पेकुलेटिव मोटिव रे कोन ना स्पेकुलेशन हमें मनी मार्केट रे हमें स्पेकुलेशन लगेबा जे कहते नहीं गोटे
न एक्जाक्टली आम जुआ कहीपरि किंतु से टाइप आम गोटे प्रॉफिट मेकिंग बा रिटर्न मेकिंग जगह लगे गोटे जो रिटर्न अधिका मिल से जगह आम पैसा को रखा स्पेकुलेशन करवा किंतु से स्पेकुलेशन माने नुह एक्जाक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आम अदर ये आम जदि सेविंग डिपोजिट रखे गोटे एक्जाक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले कि स्पेकुलेशन रे हाई रेट ऑफ रिटर्न हाई रेट ऑफ रिस्क से कही सो सेठी से कौन कहले ना स्पेकुलेटिव मोटिव है इनवर्सली रिलेटेड विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट माने डिमांड फॉर मनी इटा हला रिलेशन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट मन रखंतु ट्रांजैक्शन मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव दे आर रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनकम ता माने से माने इनकम बढ़िले ए दिटा मोटिवटा बढ़िबो किंतु स्पेकुलेटिव मोटिवटा डिमांड फॉर मनी इज नॉट रिलेटेड टू इनकम और इट इज इनकम इन इलास्टिक आ इलास्टिक कौन ना इंटरेस्ट इलास्टिक इनकम इन इलास्टिक इंटरेस्ट इलास्टिक बारंबार ये कहूँ आप देखु से स्पेकुलेटिव मोटिव इज इंटरेस्ट माने जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिबो आमर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़िबो तो एटा हमें तो मनी डिमांड फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे डायवे कहली स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर इट्स ए डिक्रीजिंग फंक्शन and it is constructed for a given income level आ गोटे मनी सप्लाई आम ये डिमांड कथा आज पढ़ले मनी सप्लाई कौन कहला ना मनी सप्लाई इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक आम सेंट्रल बैंक तार फिक्स कर रिजर्व सिस्टम थ्रू रे से केते मनी सप्लाई कर गतकाली बुझेइतिली जे से मिनिमम रिजर्व सिस्टम रे जति की टंका से सप्लाई करवा प्रिंट कर निर्भर करे गोल्ड रिजर्व और तार फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज से अनुसार तार मनी सप्लाई कर तेणु आम गतकाली आम से विषय आलोचना करते रिजर्व करेंसी और ये आम हाई पावर्ड मनी बोली कह जाए तो मनी सप्लाई इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल तापर कौन पढ़ले ना इंटरसेक्शन ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई तामे जो दीटा को डिमांड मनी और सप्लाई मनी दी जन छेद करती इंटरसेक्शन करती दैट रिजल्ट इन इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट ता माने मनी मार्केट रे इक्विलिब्रियम केतबेले हबो जेतबेले डिमांड फॉर मनी इज इंटरसेक्टिंग सप्लाई ऑफ मनी यानी डिमांड कर मनी डिमांड कर आ मनी सप्लाई कर दी जन को छेद कर इंटरसेक्ट कर जो पॉइंट रे जो बिंदु रे से छेद करले दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट तापर आमे लास्ट को आमे या कंक्लूजन करले जे एन इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम increases the interest rate while increase in money supply decrease the rate of interest. So nominal income जेतबेले हमर माने इनकम आय बढ़ुची ताले रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िला आउ जेतबेले इंक्रीज इन मनी सप्लाई तले बढ़िला किंतु रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिला रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीजेस तो एटा हला हमर आजिर अध्यायर सारांश आमे आसंता काली शेष हमर शेष अध्याय आमे आलोचना करिबा कि जहाँ जहाँ आमे पढ़िले मनी डिमांड और मनी सप्लाई तार शेष भाग आसीबो मॉनिटरी पॉलिसी बा मुद्रा नीति कौन देशर मुद्रा नीति कौन बा आगुक आमे पढ़िबा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जोटा मुद्रा नीति करुची तार को कहा थ्रू को बाटरे बा को मेथड रे से मनी सप्लाई टा को कमेइबो ता द्वारा कौन ना इन्फ्लेशन मार्केट रे कम जो क्रेडिट क्रिएशन हमें कही केमिति बैंक जो M2
M3 केमिति मार्केट रे कहबो बैंक मनी केमिति कहबो तो ये हमर परवर्ती अध्याय रे हमें आलोचना करियो जेटा कि शेष अध्याय जेटा कि मॉनेटरी पॉलिसी तो आज आम ये रखा आमर आलोचना तो आपण समस्त को धन्यवाद।